Hello, Assalamu alaikum. Today I'm going to share another case of mine, which is a case of a young male. He came to me for his back problem, बहुत severe back pain की वजह से और shoulder pains की वजह से वो मेरे पास आया and he told me that he has a severe shoulder pain और उसके बैक में बहुत शदीद दर्द था, ख़ास तौर पर अपर रीजन में उसने बताया कि बहुत शदीद दर्द है। इसके अलावा ही सेड कि जैसे फ्रीज हो गया है उसका शोल्डर, जैसे स्टक हो गया है शोल्डर, मूव नहीं करता, कमर ऐसे लगती है जैसे फ्रीज हो गई है वहीं पे, मूव नहीं हो सकता। यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक रेमेडी है रस्टॉक्स, उसका ख्याल आ रहा होगा। इसकी अलामात भी इंटरेस्टिंगली ऐसी ही हैं। उसने बताया कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो देन द पेन इज़ टू मच, ही कैन नॉट मूव, और जूं जूं वो वॉक करना शुरू करता है देन ही फील्स बेटर। In this sense, this remedy resembles with the Restox, but this is not the Restox. I will tell you about this remedy later on. But anyhow, this person told further that उसके लिए शर्ट पहनना भी मुश्किल होता है. He can't wear the shirt or raising arm is too difficult for him. वो अपनी बाजू को ऊपर नहीं कर सकता. इसके अलावा उसने बताया कि then both shoulders have are affected. कि उसके दोनों शोल्डर्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं और वो दोनों शोल्डर्स को ऊपर उठा नहीं सकता, जिसकी वजह से वो कोई शर्ट पहनते हुए भी उसे शदीद दर्द होती है शोल्डर्स में. सो ही एक्चुअली हैड शोल्डर पेन्स एंड बैक पेन्स. इसी तरह ही सेड, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द फीलिंग इन द शोल्डर. ही सेड आई फील दैट देयर इज अ गैप बिटवीन बोन्स. मुझे लगता है कि जैसे मेरी हड्डियों में गैप हो गया है, गैप आ गया है. और ही फील्स द फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स. रगड़ महसूस करता है, जैसे ड्राइनेस हो गई है, रगड़ सी महसूस करता है. फील here it resembles, I mean, somebody will think a bryonia here, but it is not a bryonia. But anyhow, then I ask him how it feels to you, the pain, how it feels there. Then he explained, pain is like something is freeze, जैसे किसी चीज ने उसको जकड़ लिया है, वो जकड़ा गया है, जैसे एक जगह स्टक हो गया है, कमर उसकी एक जगह जैम हो गई है और वो मूव नहीं कर सकती. That was the sensation he explained, or that was the pain feeling, what he explained to me. इसके अलावा he said, I have a severe depression episode and then I start thinking, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? Why this happened to me? ये मेरी पेन ऐसी क्यों, मुझे ही क्यों हो रही है? Then I want to do suicide. और ऐसी कंडीशन में उसका दिल करता था कि वो सुसाइड कर ले. Then he said, I want to get out of this situation and I'm very sensitive of what other people says about me. I get very easily angry if somebody says something to me. And then he said कि उसको अंदर हरीनेस महसूस होती है, that he feel this जल्दी कि जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं जल्दी सब काम जल्दी कर लूं. Then the story of this patient was that when he was in his country, he was kidnapped by the extremist terrorist and they put him in the jail. और उसको वो टॉर्चर करते थे. वो दिन में थोड़ी देर के लिए उसके सेल में आते थे एंड दे लिटरली स्टार्ट बीटिंग हिम, और किसी और को मारते थे इनके सामने, या बहुत ऊंची आवाज़ें शोर करते थे, चीखों की आवाज़ें, इस किस्म की आवाज़ें जिससे कि वो डर जाते थे. एंड इट वाज एपिसोड्स ऑफ torture. It was not one time torture but torture in at phases, different. दिन में 2-3 दफा ऐसे उनको torture किया जाता था. And then he said every time when they came to torture us, then I had a feeling कि I would die. मैं मर जाऊंगा अब इस बारी मैं बचूंगा नहीं.
सो एवरी टाइम वो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो उनको टॉर्चर करने के लिए आते थे, एवरी टाइम दे टॉर्चर देम। और क्योंकि उस सेल में कुछ और भी लोग थे जिनको उन टेररिस्ट ने किडनैप किया हुआ था, देन एवरी टाइम ही गेट दिस नो वे आउट, जस्ट टॉर्चर। और वो कहता है कि देन व्हेन दे गॉन, वो जब चले जाते थे, देन दे फील वेरी डिप्रेस्ड। वो रोते थे, व्हाट इज द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचते थे, नो वे आउट। सो दिस वाज द केस। This remedy looks very much like Restox, because Restox has this pain, stuck feeling, move नहीं कर सकता, थोड़ी सी मूवमेंट के बाद बेहतर महसूस करता है, पेन्स एग्रीवेट इन द मॉर्निंग, सो इट्स डिफिकल्ट टू वॉक, फर्स्ट मूव उनके लिए मूव करना डिफिकल्ट होता है। सो इट रिजेंबल टू मच विद रेस्टॉक्स, बट दिस इज नॉट अ रेस्टॉक्स। एंड विद द टेरर एक्सपीरियंस, उसमें ये स्ट्रेमोनियम के ज़ेन में आता है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम हैज दिस फियर विच स्टेज विद यू। एंड इस पेशेंट में हम वो नहीं देखे कि उसके साथ फियर चल रहा है। इट वॉज एन एपिसोड विच इज गॉन, इट्स गॉन, बट इट्स नॉट in the present moment, so we cannot prescribe stramonium in this state. So next remedy which comes in your mind is pulstella or ranculus, which has this hurt feeling, impressions की वजह से they feel very hurt inside, but this is not pulstella, because pulstella has very mild nature, but this person is advanced, very advanced. So now I have given him a very rare remedy actually, and practically now this is not a rare remedy anymore in my practice. I have prescribed this remedy a number of patients with very good results in back pains, mostly in back pains, and the name of the remedy is Rhus Radicans. Now let me explain this remedy to you. What is the difference between Rhus Radicans and Restox? This is the same family, Anacardiaceae, same group of remedies, जिसमें Restox आती है, Rhus Radicans आती है, Anacardium आती है. This is the same group of remedies, but this remedy has a lot of resemblance with Restox. Now let me explain this remedy to you. It has this back pain, upper area, lower areas, and the middle areas. So actually this remedy works in whole spine area, with the stiffness and tightness in the body, especially the sensation that they are stuck, जैसे jam हो गए हैं वो. This is the main sensation of Restox. और इनमें भी सुबह के टाइम पे स्टिफनेस ज़्यादा होती है. दे कैन नॉट मूव इन द मॉर्निंग बिकॉज दे फील स्टिफ in the body, in the spine. That's why for them the initial movement is difficult. इसी तरह they have this stiffness in the sacrum region, जो बॉडी का जो स्पाइन का निचला हिस्सा है, that is also feels stiff, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते और वीक महसूस करते हैं. इसी तरह इस रेमेडी के अंदर बर्निंग भी पाई जाती है. इसके अलावा बिटवीन स्कैपुला वहाँ पे भी पेन और बर्निंग की सेंसेशन पाई जाती है. इसी तरह रिजिडिटी या स्टिफनेस ऑफ नेक जिसमें कहा जाता है, उसमें भी इस रेमेडी को यूज किया जाता है. Despite of muscular issues, this remedy is also used in rheumatism and joint problems, swelling of the joints. This remedy has wandering pains from joints to joints. That's why this remedy resembles with pulstella a lot. And that's why sometimes people are confused between this remedy and pulstella, because pulstella also has this wandering pains from one place to another one, but sometimes pulstella have total different shape of disease. Let's say कि sometime उनके शोल्डर में दर्द हो रही है तो नेक्स्ट डे उनके मेदे में दर्द चली जाती है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ pulstella, but this kind of thing you can also find in Rhus Radicans.
इसी तरह इसकी जो पेन्स हैं दे मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर जॉइंट्स, मींस पेन स्टार्ट फ्रॉम द एंकल एंड गोज टूवर्ड्स नीज और द हिप जॉइंट्स। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बॉडी में मस्कुलर और स्केलेटन के इश्यूज हैं, जहां पे भी ये सेंसेशन पाई जाती है कि उनको महसूस होता है कि वो स्टक हो गए हैं, जैम हो गए हैं, जैसे किसी चीज में जकड़े गए हैं। दैट इज द सेंसेशन ऑफ रेस्टॉक्स एंड एनाकार्डियासिया, द होल ग्रुप। बट स्पेसिफिकली इफ द पर्सन हैज दिस लॉन्ग लास्टिंग स्टकनेस विद द फीलिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो गया, then you must think of this remedy, because this is the key what I have found out after many patients, कि इनके अंदर ये चीज अगर आपको हो कि अगर पेशेंट महसूस करे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और या किसी किस्म का गिला उसके अंदर महसूस हो या गुस्सा एंगर पाया जाए, then you must think of this remedy. Rhus Radicans has almost identical action as Restox. Restox also has this tongue, burning of the tongue, and especially the tip of the tongue is a burning sensation or swollen or red. Rhus Radicans has the same symptom. इसकी पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रेस्टॉक्स की तरह होती हैं। रेस्टॉक्स में भी इनिशियल मूवमेंट, जो पहली मूवमेंट है वो मुश्किल होती है, पेशेंट के लिए पहली मूव करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह को वो बहुत ज्यादा स्टक महसूस करता है, स्टिफनेस महसूस करता है, टाइट महसूस करता है, उसके लिए मूवमेंट करना, किसी भी किस्म की बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस मोशन, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट उनको रिलीफ देती है पेन से। दिस इज द सेम पेन feeling of pain sensation in the Rhus Radicans. So that's why this remedy is often confused with the Restox. Rhus Radicans has this recurrent symptoms like leukosis. So they every year the same symptoms appeared in the patient. So this is actually mentioned by Alan in his book, that this remedy has this periodicity, yearly periodicity in nature. इसी तरह Rhus Radicans act more deeper way or more deeply than Restox, as I have used this remedy in those back pain which last longer. In Restox pain comes and go, जैसा कि हम जिस तरह चुक पड़ना होता है, पेशेंट को यकदम चुक पड़ जाती है, ही कांट मूव एंड देन थोड़ी देर बाद वो मूव करता है, देन ही कैन मूव इजीली, और वो 1-2 दिन 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। बट Rhus Radicans हैज दिस स्टक फीलिंग एंड दे हैव लॉन्ग लास्टिंग पेन्स and the feeling of unfortunate, why this happened to me, why this happened to me, this is the question, and that also produce anger in them, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, गुस्सा करते हैं। and that is the malarial miasm which is described by Shankaran, कि उनके पेशेंट्स में गुस्सा आता है जब उनको बार बार हिट हो रहे होते हैं बीमारी की वजह से, that produce this anger. Despite of muscular or joint issues, this remedy has also effect on liver and other muscular and skin issues. Shankaran from India, he has mentioned a very interesting case of a chronic liver disease in his book Sensation. Its skin condition also resembles too much with Restox, like burning sensation, जैसा कि जलन वाली जो पॉइजनस आईवी आपको टच हो जाती है, देन इट प्रोड्यूस बर्निंग, एक्सट्रीम बर्निंग, इची सेंसेशन एंड अर्टिकेरिया जो छपाकी से निकल आती है रेस्टॉक्स की तरह की। इसी तरह इस रेमेडी के अंदर भी उसी तरह की स्किन की अलामात पाई जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पोटेंसी. Mostly I have given this remedy in 200 potency, but some cases I have given this remedy in 30 as well. But old masters has also given this remedy in 12C or 12X as well. जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस इस रेमेडी के बारे में है तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज, बाय।